बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बताना हमें ज़रूर कमेंट्स में भी, और हमें इस तरीके से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी मैसेजेस आते हैं, मेल्स भी आते हैं, आप सबके सजेस्टेड वीडियोस भी आते हैं कि आप नेक्स्ट इस वीडियो पे रिएक्ट करें, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और हम हो सके उतना जल्दी इस चीज़ को पूरा करेंगे। और जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं हम सबको रिप्लाई दें, पर फिर भी हम माजरत चाहते हैं उस चीज़ के लिए। हम ज़रूर उन सबको रिप्लाई देंगे। हाँ, तो आज हम वीडियो लाए हैं जो कि है हु इज़ अल्लाह, अल्लाह कौन है। और ये काफ़ी नॉन मुस्लिम्स या फिर बहुत सारे वीडियोस या चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी गलत चीज़ें फैलाई जाती है कि ये अल्लाह के बारे में बहुत गलत बातें बोलते आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि अल्लाह कौन है और वो कितने पावरफुल है ना? हाँ, चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। The Lord of the Arsh and Kursi. We're talking about the Lord of the worlds. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We're talking about the Lord of the entire universe and beyond. The entire universe and beyond. You know, we live in this dunya and we are fascinated with this dunya which Allah subhanahu wa ta'ala indeed has created in a beautiful manner. We're fascinated. There are over billions of people which live on this dunya at this moment in time. Over 6 billion people that live on the dunya at this moment in time. This dunya of Allah subhanahu wa ta'ala is so big that there is space in this dunya for billions and billions and billions or more people. But what is this dunya in comparison to what Allah subhanahu wa ta'ala has created out there? This dunya is insignificant. This dunya is meaningless to Allah. It means nothing. It is worthless. So worthless, compare it with the sun. The sun is one star. You know more science than me. You'll be able to tell me better. Take this planet Earth and you place it inside the sun, and you will be able to place 1.3 million Earths in the sun. 1.3 million Earths in the sun. Allahu Akbar. Allah is the greatest. The sun is one star. One star. There are stars out there which are millions of times bigger than the sun. You tell me this, that you need millions and millions of stars to make one galaxy. And then you tell me this, that there are zillions of galaxies out there. Let me tell you on top of this, my friend, after this, whatever you see above, when you raise your head and you look above, whatever you see above, the zillions and zillions and zillions of galaxies, let me tell you, this is everything there is within the first heaven. Everything there is within the first heaven, and Allah is the creator of 7 heavens. 7 heavens. And the distance between the first heaven and the second heaven is 500 years. You know, the distance that can be covered in 500 years, at what speed? Only Allah knows. Only Allah knows. But it will take 500 years to get from the first heaven to the second heaven. 500 years from the second to the third, third to the fourth, fourth to the fifth, fifth to the sixth, sixth to the seventh. Every time it will take 500 years. After the 7 heavens, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. You all read the Ayatul Kursi. You all know the Ayatul Kursi. After this, you have the Kursi of Allah. You have the chair of Allah subhanahu wa ta'ala. You know these 7 heavens that we've just talked about, in comparison to the Kursi of Allah, they're non-existent. They're meaningless. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given an example in a hadith, just to give us a little bit of understanding with regards to the 7 heavens in comparison to the Kursi of Allah. Take a ring from your finger, take it off, the small ring that you have, and place it, let's say, in a desert, the Sahara Desert. It's the biggest desert in the world. You know that ring that we take off from our fingers and place it in the Sahara Desert? What comparison is in between the ring and the Sahara Desert? Nothing. Nothing.
The 7 heavens is the ring, and the kursi of Allah is the Sahara Desert. After the kursi of Allah, you have the arsh of Allah. وَكَانَ أَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. You have the arsh of Allah. Again, Rasulullah has explained, so just so that we can understand. Take the ring, place it in the desert. This time, the ring is the kursi and the arsh is the desert. What is the kursi in comparison to the arsh of Allah? Nothing. Then you have angels which carry the arsh of Allah. Their heads are in the 7th heaven and their feet are in the lowest earth. My friends, then you have the Lord of the arsh and kursi. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. He is beyond the size of Allah, who Allah is, what Allah is. The greatness of Allah is beyond the comprehension of my little mind. This is the being that you and I are messing with. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ये था वीडियो. हमने पूछा था कि हु इज़ अल्लाह, और आपकी इमेजिनेशन से भी ऑन है, क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल बताया कि आप एक सन को देखते हैं, उसके सामने अर्थ बहुत छोटी चीज़ है और सन इज़ अ स्टार, द ड्रॉप स्टार. ऐसे मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ स्टार्स है. और एक चीज़ पता चली कि देयर आर 7 हेवंस, और 7 हेवंस के बाद आपको अल्लाह मिलेंगे. यू विल फाइंड द कुर्सी ऑफ अल्लाह. और हर एक हेवन के बीच में डिस्टेंस है 500 ईयर्स. 500 करके 7, आई थिंक 3500 ईयर्स क्रिएट होंगे. उसके बाद आपको अल्लाह मिलेंगे. वो ऐसी बात बता रहे हैं. वो बता रहे कि अल्लाह इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. ही इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑफ द यूनिवर्स. तो हमने पहली बार जो वीडियो देखा तो थोड़ा क्या बोलते हैं, गूज़बम्स आ गए और डिफरेंट वाइब क्रिएट होती है जब भी अल्लाह का नाम आता है या उनके बारे में कोई वीडियो होती है. तो एक वो बोलते हैं अल्लाह अकबर, तो वो चीज़ सुनते ही एक बोलते हैं ना, घंटी बज जाती है, बेल बज जाती है. तो वैसी फीलिंग आती है. और ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हमें. बस अल्लाह का नाम लीजिए, आपको आपको पावरफुल फील करोगे आप, और बस आगे बढ़ते रहोगे. तो हमें काफ़ी अच्छी लगी वीडियो ना, काफ़ी कुछ जानने मिला और पावरफुल चीज़ें समझ में आती है उनकी वीडियो में से. तो ये था हमारा आज का वीडियो. मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में. जब तक के लिए नमस्ते, अल्लाह हाफ़िज़.